guys, welcome back to my channel, and today we are doing a full makeup review from the brand Swiss Beauty. So I've got like 4 products from Swiss Beauty. This is like my first time trying makeup from Swiss Beauty. इससे पहले मैंने Swiss Beauty कभी use नहीं किया, and I actually got a request to review their foundation. So I thought while I am picking the foundation, I also got my eye on a lot of different things from Swiss Beauty. So I ordered everything, and I wanted to do one sit down video where I would, apply all these products and do like a proper makeup video using these products. So now I will be applying all these products on my face, and I'll show you how the shades look on my skin and how the products perform on my skin. So yeah, let's get started. So excited to use all the products. The first one that I'm using is this Pearl Illuminator base, which comes in 2 shades. I have golden pink, which basically means rose gold, and I will be applying it on half of my face so that it's easier for you to compare the product against my bare skin कि वो कैसा difference आता है skin पे, वो आप compare कर सकते हो. इसका रोज गोल्ड टिंट इज क्वाइट विजिबल. आई फील काफ़ी क्लियरली दिख रहा है वो टिंट फेस के ऊपर. अभी मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ, और आई थिंक मेरे डॉट करने से ही आपको दिख गया होगा साफ साफ कि कितना ज़्यादा ब्राइट उसमें एक रोज गोल्ड टिंट है, और फेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एविडेंट है. एंड आई लव्ड इट. आई फील इसके ऊपर जब फाउंडेशन लगेगी तो बहुत अच्छा उसका डूवी फिनिश आएगा, ग्लोई फिनिश आएगा. सो डेफिनेटली अ हिट फॉर मी. अभी मैंने अपना आर्टिफिशियल लाइट ऑफ कर दिया है, विच आई यूजुअली डू इन माई वीडियोज़ टू शो यू कि नॉर्मल रूम लाइट में वो कैसा लग रहा है, क्योंकि डिफरेंस तो आ ही जाता है लाइट से. सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन. दिस इज़ एर हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन इन द शेड मीडियम बेज. मैंने काफ़ी रिसर्च किया था सारे शेड्स पे, एंड दिस इज़ वन शेड आई फाउंड क्लोजर टू माई स्किन. मैंने ये फाउंडेशन को अलग से रिव्यू भी किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो. पर अभी मैंने इसको अपने बेस के ऊपर, जो मैंने इल्यूमिनेटर बेस लगाया था उसके ऊपर मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ. इस फाउंडेशन का अपना खुद का फिनिश भी थोड़ा सा डूवी ही है, और अभी इल्यूमिनेटर बेस के ऊपर वो और ज़्यादा डूवी और शाइनी सा लग रहा है. सो शेड आप देख सकते हो बाकी की स्किन से कंपेयर करके, इफ़ इट्स अ गुड मैच और नॉट. मेरे को तो ऑनेस्टली ठीक लगता है अपने फेस पे. कवरेज उतना अच्छा नहीं है इस फाउंडेशन का, थोड़ा सा शेयर फिनिश है, बट जो लुक आता है वो डूवी आता है. मतलब फिनिश डूवी है बट कवरेज कम है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ शेयर फाउंडेशन. थोड़ा सा आई वुड से, अब प्रॉपर रिव्यू नहीं दूंगी मैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दैट, उसमें आप देख सकते हो वीडियो में. बट दिस इज़ हाउ द फाउंडेशन लुक्स ऑन माई स्किन. And I like the finish, the dewy skin that it gives. That I definitely love. Abhi again I have switched off my artificial light to show you how it looks in a normal room light setting. Now I'm moving on to concealer. I am using this in the shade medium beige again, and this is how the shade looks. Honestly ये थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन के लिए. यूजुअली आई गो फॉर कंसीलर्स जो थोड़ा सा मैच करते हैं मेरी स्किन से. मेरे पास हैं ऐसे कंसीलर्स. ये थोड़ा सा लाइट है, बट नॉट समथिंग दैट आई कैन नॉट मैनेज. ऑब्वियसली किसी के साथ तो मैं यूज़ कर ही सकती हूँ हाईलाइटिंग के लिए, या फिर इन जनरल कभी किसी और कंसीलर के साथ मिक्स करके. बट थोड़ा सा लाइट है. कवरेज उतना अच्छा नहीं है कंसीलर का. ओके कवरेज है आई वुड से. Other than that it's okay, decent. मतलब considering the price, I think it's decent. Moving on to their highlighter, which I got in the shade gold, and you can see the gold oozing out. I am applying it on my face right now on top of my cheeks, and definitely it's glowing. The highlighter is highlighting. Definitely a shade that you can see from a distance. काफ़ी visible है. वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है मिरर में देखने पे, कि इसमें कुछ चंकी पार्टिकल्स हैं जो कि अलग से दिख रहे हैं, विच डज नॉट लुक वेरी गुड, डज नॉट लुक वेरी क्लासी. ऑनेस्टली थोड़ा सा चीप लगता है मुझे. सो हाईलाइटर से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ. थोड़ा सा बेटर हो सकता था. कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिन है हाईलाइटर की. तो अभी आप कंपेयर कर सकते हो बेयर स्किन, मेकअप स्किन. यहाँ पर मेकअप लगा है, स्क्रीन पे मैंने लिख भी दिया है कहाँ पे. आप डिफरेंस देख सकते हो विदाउट मेकअप, विद मेकअप, क्या डिफरेंस आया है स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करके मेरे स्किन के ऊपर, वो आप कंपेयर कर सकते हो. और डेफिनेटली 4 प्रोडक्ट्स यूज़ किए मैंने. अगेन विदाउट मेकअप, यू कैन सी दिस इज़ हाउ माई फेस.
and with makeup ऐसा लग रहा है. So you be the judge. So that was the whole look, and let me know how do you think it worked. Let me know if you have tried any of these products from Swiss Beauty, and what is your review about them, because I've kind of got, like, as you must have seen, mixed feelings about a few products, and then of course, you know, shades mismatch happens sometimes, except for the concealer, which I felt was a little lighter for my skin tone. I think the rest 3 products are pretty fine. And as I say in all my foundation swatch and review videos, you're never going to find like a perfect true match in like all the makeup products, you know what I mean. जैसे मैंने बहुत सारे foundations try करी हैं, बहुत सारे foundation brands की, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरा परफेक्ट मैच सब में मिल जाए. किसी किसी ब्रांड में मिल जाता है, किसी किसी ब्रांड में सारे शेड्स ट्राई करने के बाद भी नहीं मिलता. What I do is I usually go for the shade which is like closest to my skin tone, which doesn't turn grey on my skin and which complements my skin tone. And that is how I make my choices. In this video, I have applied the foundation over the Illuminator base that is from Swiss Beauty. If you wanna see like a proper review of just the foundation, that you know कि वो bare skin पे लगाने पे foundation का look कैसा आता है और coverage कैसा है without any concealer, without anything, just the foundation. So I have uploaded that video. I will be linking it right here. I will also be linking it in the description box. So yeah, so this was the full-on review from Swiss Beauty, and I really hope you enjoyed watching this video, and if you did, then please show your love by giving this video a big like and also subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on my Instagram. I have 2 different Instagram handles, one for makeup, one for fashion. I will be linking both of them in the description box. Thank you so much for watching today's video, and now I will see you in another video on my channel very soon. Till then, take care of yourself. Bye bye.